Hello class 7, this is the video about chapter number 6. The name of this chapter is How Things Changes. In this chapter we are mainly going to talk about the physical changes and the chemical changes. फिर हम देखेंगे कि कैसे कैसे physical changes or chemical changes how they take place in our surrounding. We also earlier have talked about many changes taking place in our surroundings, like the change in the position of the sun, the change in the weather conditions, seasonal changes we observe. और हम देखते हैं कि हाउ द पोजीशन ऑफ द मून चेंज फ्रॉम डे टू डे, हाउ द शेप ऑफ मून चेंज फ्रॉम डे टू डे, और हम देखते हैं कि हाउ अ मैच स्टिक इज बर्निंग, कर्लिंग ऑफ मिल्क, है ना, ये सब चीजें हम देखते हैं, राइपनिंग एंड रोटनिंग ऑफ मैंगोज, रस्टिंग ऑफ आयरन. सो दीज आर द चेंजेस वी ऑब्जर्व इन आवर सराउंडिंग, और यही हमें इसमें बात करनी है और क्लासिफाई करना है कि हाउ a change is classified as a physical change or a chemical change. तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा कि मैटर की. हमें पहले पता होना चाहिए कि मैटर क्या होता है. We know that matter is everywhere, and matter is anything that takes up space and has mass. Matter is constantly experiencing both chemical and physical changes. ये सब हमें पता है बेटा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल चेंज के बारे में हम बात करते हैं कि फिजिकल चेंज क्या होता है. फिजिकल चेंज alters the form of a substance but does not change it to another substance. यानी कि फिजिकल चेंज क्या करता है, उसकी वन फॉर्म एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर देगा, फिजिकल एस्पेक्ट को चेंज करता है, बट इट डज नॉट changes the chemical composition of the substance. It changes shape or size, it dissolves, it changes phase, like freezes, boils, evaporates, condenses, है ना. एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं मेकिंग ऑरेंज जूस. पहले ऑरेंज ऐसा था, अब हमने इसको जूस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया. फिजिकल चेंजेस जो हमारे होते हैं अकर व्हेन मैटर चेंजेस इट्स प्रॉपर्टी बट नॉट इट्स केमिकल नेचर. लाइक वी sorry, like we can see that physical properties changes could include a change in texture, in shape, size, color, order, volume, mass, and weight and density. So these are the things you can see in the picture shown over here. Ki we have water in a glass and it has converted into an ice cube there. Similarly, physical change हमारा क्या होता है, जैसे कि we are cutting a paper, so or toning of the paper. So this is an example of physical change. Melting of ice is a physical change. So these are the physical changes. Now talking about the chemical changes. और chemical changes क्या होते हैं? Chemical changes, students, are changes matter undergo when it becomes new or different matter. Like burning of something, temperature changes without heating or cooling, it bubbles, it changes color, it forms a precipitate. So जब हमें ये सब changes देखने के लिए मिलते हैं, so we can say that the change is a chemical change, or we can say that when a substance undergoes a chemical change, it is changed into different substances with different properties. उसकी properties भी अब change हो गई. To identify a chemical change, लुक फॉर साइंस सच एज कलर चेंज. आप देखते हैं क्या कि अगर कलर में चेंज हो रहा है, बबलिंग एंड फिजिंग अगर कहीं पे हो रहा है, इट मीन्स कोई गैस वहां पे क्या हो रही है, दैट इज फिजिंग आउट, है ना, दैट इज द गैस इज एस्केपिंग आउट फ्रॉम देयर. लाइट का प्रोडक्शन कहीं पे हो रहा है, चेंज इन टेम्परेचर अगर कहीं पे हो रहा है, स्मोक और प्रेजेंस ऑफ हीट हो रहा है, लाइक बेकिंग अ केक, है ना. इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज. क्यों है ये केमिकल चेंज का एग्जाम्पल? वी ऑब्जर्व देयर दैट कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है इन दिस प्रोसेस, सो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज केमिकल चेंज. नाउ टॉकिंग अबाउट सम साइंस ऑफ केमिकल चेंज, हम कैसे बता सकते हैं दैट हमारा chemical change is taking place. So first thing is the precipitation, formation of precipitation. अगर किसी solution में if turbidity appears there, अगर turbidity appears there, so we can say that preparation of precipitation has taken place or a chemical change has taken place. Similarly, हम देखते हैं कि a chemical change occurs when fireworks are used. Fireworks are made of metals such as magnesium and copper. These changes chemically
as they light up the sky. तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये भी क्या होता है, हमारा chemical change होता है. Some another examples we can see, sugar dissolving in tea, है ना, logs burning, breaking water, all these things are examples. Rusting of metal is also an example of chemical change. अब आप कहेंगे कि how it is a chemical change. So बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है, iron reacts with the moisture present in the air, forming a compound that sorry, that is known as rust. फेरिक ऑक्साइड जिसको हम बोलते हैं. सो इट इज अ केमिकल चेंज देयर. नाउ टॉक अबाउट सम ऑफ द एविडेंसेस ऑफ अ रिएक्शन, कि हम कैसे बताएंगे कि रिएक्शन कोई is taking place over there. So formation of a gas, अगर कहीं पे कोई गैस बन रही है, so we can say that some reaction is taking place over there. और ऑब्जर्वेशन हम करते हैं कैसे, थ्रू द bubbles, smoke या order, कोई fumes वहां पे निकल रही हैं, और we observe some bubbles there, so we can say that that gas is fizzing out from there, or gas is evolving from there. Second thing is the change in color. अगर कहीं पे change कोई color में अगर हम observe करते हैं, so we can say that some change in color are physical changes भी होते हैं, so be careful, है ना. लेकिन वहां पे reaction तो कुछ हो रही है, हम कह सकते हैं reaction is taking place over there. The third thing is the formation of a solid precipitate. हमने बताया आपको कि precipitate अगर कहीं पे बनते हैं, तो हम ये बता सकते हैं it is an evidence of reaction taking place. The next thing is change in heat or light. तो अगर आपने जिस चैम्बर में आपने कोई कंपाउंड को रखा है, अगर वहां पे क्या हो रहा है, इफ वी ऑब्जर्व सम चेंज इन द टेम्परेचर देयर, सो वी कैन से दैट रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस देयर. नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट सम ऑफ द टाइप्स ऑफ रिएक्शन, की रिएक्शन हमारी किस टाइप की, कौन कौन सी टाइप की होती है. वी हैव टू फोकस मेनली देयर here only three types of chemical reaction. First thing is the combination reaction. अब ये combination reaction आपको नाम से ही पता लग रहा है कि combination reaction है. क्या होती है बेटा combination reaction? In this combination reaction, two elements or more elements combine together to form a compound. As you can see from the examples here, calcium plus oxygen, they are forming calcium oxide, है ना. Ca plus O2 कंबाइन होके क्या बना रहे हैं, CaO बना रहे हैं. SO3 plus H2O मिलके क्या बना रहे हैं, H2SO4. H2SO4 is what? Sulfuric acid. So these are the examples of combination reaction. This is the first type of reaction. Next is the decomposition reaction. As the name depicts, decomposition reaction, that means the decomposition of a larger compound into a smaller one. So one reactant falls apart into two or more elements or compounds. Examples here are NaCl on passing electricity breaks down into Na plus chlorine gas. Similarly, calcium carbonate breaks down into calcium oxide, giving out the carbon dioxide gas. So these are the examples of decomposition reaction. That is the second one. And the last type of reaction that we have to deal here is the replacement reaction, or simply says single replacement reaction, or in the other term we can say it is displacement reaction. As the name depicts कि डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर देखने के लिए हमें मिलता है. वन एलिमेंट्स डिस्प्लेसेस द अनदर वन. रिएक्टेंट्स मस्ट बी एन एलिमेंट एंड अ कंपाउंड. जैसे यू ऑब्जर्व हियर, एग्जांपल इज हियर, सोडियम प्लस KCl एंड दिस साइड. देखिए क्या हो रहा है इस रिएक्शन में, सोडियम ने क्या किया, Na has displaced K from this salt and has formed NaCl, है ना. तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ ना. सो दीज आर द थिंग्स वी हैव टू डिस्कस इन दिस चैप्टर. आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी, क्लियर हुई होंगी, और आप पढ़िए इस चैप्टर को, और कोई भी दिक्कत आती है तो आई एम हियर विद यू टू डील विद द थिंग्स. थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस डे. कीप वर्किंग हार्ड. थैंक यू.